सिलिकॉन वैली में आज अमेरिकन इसलिए इज्जत देते हैं कि हमारे इंजीनियर्स वहां डोमिनेट कर रहे हैं। आउट ऑफ 3 of the Silicon Valley, one will be found, the one of the CEO is from the India, and that is the technological power of the India. हम लोग एक्रेडिटेशन और रिकॉग्निशन पर ध्यान दे रहे हैं। हमारा जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें राइट नाउ गवर्नमेंट के 2 ही कॉलेज है, एक नया खुला है पुराना सिंदरी। आज वहां के ट्रेनिंग प्लेसमेंट उनको हम लोग आज अप्रिशिएट भी कर रहे हैं क्योंकि आईसीटी ने उनको अप्रिशिएट कर रखा है। हमारा जो इनोवेशन काउंसिल है उनको भी प्रोफेसर को बुलाया है कि जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अप्रिशिएट किया है, और एनबीए हो चुका है, नैक हो गया है, आरटीसी को नैक मिला है, बहुत से दूसरे कॉलेजेस भी हमारे आगे आ रहे हैं। ये हमारा मिशन है कि 2025 में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस एफिलिएटेड है सबको नैक हम लोग मैंडेटरी कर देंगे। आई विल फोर्स देम ऑल टू गेट एक्रेडिटेशन। रिसर्च पार्ट हमारा मिशन का पार्ट है कि जेओटी विल बी ए हब ऑफ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर कल्चर। मेन को मैं जानकारी दे दूं, इस साल हमने सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में हम लोग आइडिया पिचिंग कंपटीशन कराया। सेकेंड लेवल का भी आईटी सिंदरी में इनोवेशन हुआ, वो भी आईआईटी के प्रोफेसर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के द्वारा हुआ, और थर्ड लेवल पर 21 दिसंबर को जेओटी में हुआ, और 30 टीमों को हम लोगों ने सीड ग्रांट दिया करीब 10 लाख के आसपास, ताकि आइडियाज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टार्टअप, और ये कल्चर हम लोग ला रहे हैं जो हमारा मिशन का पार्ट है। अभी हम लोगों को आईआईटी आईएसएम खुश होकर 2.4 करोड़ का सीड ग्रांट हम लोगों को यहाँ फैब्रिकेशन लैब फैसिलिटी 60 लाख एवरी ईयर अपार्ट फ्रॉम द मेंटरिंग सपोर्ट को हमें प्रोवाइड करने जा रहा है, और बहुत सारे इंडस्ट्री हमारे पास आ रहे हैं। उन्होंने करिकुलम देख के हम लोगों को एप्रिशिएट करना शुरू किया। करिकुलम में मैं बता दूं कि हम लोग 2 माइनर्स यूजीसी के अनुसार स्टूडेंट को दिया है, लेकिन हमारी एकेडमिक काउंसिल ने कहा कि क्वालिटी मस्ट बी मेंटेन। हम लोगों ने माइनर्स को कॉलेज को नहीं दिया है फ्रीडम स्टार्ट करने के लिए। पहला माइनर जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथ मिलकर हम लोगों ने 20 क्रेडिट्स का किया है। हम नाइलेट के साथ माइनर को फ्लोट किए हैं एआईबीपी का साइंस में, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हमारे आ रहे हैं। जान के आप लोग को खुशी होगी कि जर्मनी की 2-3 यूनिवर्सिटी हमें अप्रोच किया है हमारे करिकुलम को देखकर कि वी आर रेडी टू कोलैबोरेट विद झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। एक लेवल की डिस्कशन हो गई है। रिमेनिंग जो इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज आने वाले बैच को मिलने जा रहा है, जे जर्मनी की यूनिवर्सिटी को कहना है कि 2 साल आप जेओटी में पढ़ाएं, हम लोग उनको टेस्ट लेंगे, 3rd ईयर और 4th ईयर हमारी यूनिवर्सिटीज में करेंगे, और फीस उनको नहीं देना है, न हॉस्टल फीस देना है, न वहां का फीस, केवल वो अपना बगल में घूमना फिरना है उनके लिए फीस देना है, क्योंकि कोलैबोरेशन स्कीम्स में हम लोग ला रहे हैं। हम लोगों ने एक कोर्स डिजाइन किया है, सभी भाटिया के नाम आपने सुना होगा, hotmail.com। एक्जीक्यूटिव काउंसिल ने उनके भी कोर्स को अप्रूव कर दिया है। वो कोर्स है क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी एंड इनोवेशन, और उस कोर्स को भी हम लोग एडवांस कोर्स में दे रहे हैं। ये हमारा जो मेजर थिंकिंग है जो हम लोगों ने करिकुलम में किया है। हमारा स्टूडेंट का जो अचीवमेंट्स है, क्योंकि ये एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, तो हम स्टार्ट करते हैं पीआईटी सिंदरी से ही। 80% से अबव पीआईटी सिंदरी ने प्लेसमेंट को लगातार अचीव किया है। इंटरसाला में नंबर 1 है झारखंड में, और नंबर 10 है। हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट अफसर को एआईसीटी ने बुला के उनको अप्रिशिएट किया। हम लोगों को लगा हमारी एजेंसी हमारे टीचर को अप्रिशिएट कर रहा है, तो वी विल बी फेलिंग इन आवर ड्यूटी यदि हम उनको इस प्लेटफॉर्म पर नहीं अप्रिशिएट करें। तो डॉक्टर घनश्याम हमारे पास है, उनको हम लोग अप्रिशिएट करने जा रहे हैं। हमारा इनोवेशन काउंसिल स्टार्टअप पीआईटी सिंदरी का झारखंड का पहला है, जो आईटी धनबाद भी बोलता है कि सबसे पहला लीड पीआईटी सिंदरी लिया था। तो उनके भी जो प्रोफेसर इंचार्ज हैं, टॉप 25 गवर्नमेंट कैटेगरी में हुए, और 3rd रैंक मिला हुआ है इसमें, 3rd स्टार रैंकिंग प्रोफेसर प्रकाश कुमार जी के, उनको भी हम लोग देने जा रहे हैं। रिमेनिंग जो 2 हमारे हैं स्टार्टअप का जो कोर्स है, हम लोग एआईसीटी के कहने के पहले से हम लोगों ने स्टार्ट किया, डेवलप किया, और ये सिलिकॉन वैली के द्वारा इस कोर्स को डेवलप किया गया। उसमें रमेश यादव साहब और उनकी टीम है।
ये लोग आईआईटी मुंबई को भी पढ़ाते हैं, आईआईटी गांधीनगर को, और 5 महीने से ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को पढ़ा रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, उनको भी आज अप्रिशिएट कर रहे हैं। और प्रोफेसर ताप्ती चक्रवर्ती जिन्होंने पहला कोर्स को डेवलप किया, पहला कुलगीत को डेवलप किया और कोर्स आर्ट्स एंड ब्यूटी का डेवलप किया, उनको भी हम लोग कह रहे हैं। और हमारा इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ऑटोडेस्क के साथ है, टाटा स्टील के साथ है, सेल के साथ है, एनटीपीसी के साथ है, सारे लोग आ रहे हैं, हमको कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस है बच्चों का हैंड्स ऑन हमको ये कराना है। तो कुछ मैं some message from my side to my graduating students। आज आप ग्रेजुएट होके जा रहे हैं, आज तक तो आप पेरेंट्स के कंट्रोल में थे, लेकिन याद रखें अब आप जीवन के नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। सक्सेस डज नॉट मीन इट इज योर पर्सनल अचीवमेंट ओनली। सक्सेस मीन्स यू मस्ट बी कंपैशनेट। कितने लाइफ को आपने टच किया, कितने लाइफ को आपने बदला, कितने कम्युनिटी को आपने चेंज किया, अपने कंट्री के लिए क्या किया, वर्ल्ड को जो आपने कितना ब्यूटीफुल प्लेस बनाया। क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम हमारा फिलॉसफी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः ये हमारा फिलॉसफी है। ये इंडिया का जो कोर वैल्यू है, ये हमें प्रचार करना है, क्योंकि ट्रू एजुकेशन जो है अभी भी वही है। तमसो मा ज्योतिर्गमय सतो मा सद्गमय, ओ गॉड टेक मी फ्रॉम डार्कनेस टू एनलाइटमेंट। हे ईश्वर अंधकार को मिटाओ, ये एजुकेशन का पर्पस है। अदरवाइज आप वर्ल्ड में देख रहे हैं कितनी अशांति फैली हुई है, केवल बिलीफ सिस्टम के कारण। लेकिन इंडिया पर सारे लोग डिपेंडेंट है। ये इंडियन सिटीजन है जो पूरे वर्ल्ड को रास्ता दिखा रहे हैं, शांति से कैसे रहा जाता है, डाइवर्सिटी में कैसे रहा जाता है। So you people be the thought bearer because you are the technocrat। आपके लिए पूरा ग्लोब विलेज है। So be bold in your ambition, but be compassionate in your action। The true measure of success is not just in personal achievement, but in the difference you make in the lives of others and the community। So I would like to thank our महामहिम लाधिपति महोदय का हम लोग का आशीर्वाद हमेशा मिलते रहता है। आपके आगमन से ये जीओटी परिवार प्रफुल्लित है। सर, ये पहला हमारा कन्वोकेशन है, ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा जब भी इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी। और आपके हाथों से आज हमारे बच्चे गौरवान्वित, उनको आशीर्वाद मिल रहा है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर विनीता साहब। मैम, इनकी तबीयत खराब थी, जब मैंने कहा थोड़ी प्रोसेसिंग आई गॉट ए थ्रोट इन्फेक्शन, बट आप जानते हैं मेरी कमिटमेंट लेवल कितना है। जो भी हो मैं 10 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी। सो वी आर थैंकफुल टू यू। शी इज ए वंडरफुल स्पीकर, द सेकंड lady of India who has occupied the second time the position of director। Let us wait to listen her। As we celebrate the success for a student, let us look forward to future GOT becoming a center of excellence। I am thankful to the government of Jharkhand। हमारी विभाग उच्च तकनीकी शिक्षा वो काफी प्रयास कर रही है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस्टैब्लिश किया जाए, जो हम लोग का मिशन है, ताकि हमारे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जीओटी को झारखंड में पढ़ना पसंद करें। तो आने वाले समय में बहुत सारे सेंटर्स जो है आपको बीआईटी सिंदरी में मिलेंगे, जीओटी में मिलेंगे, और भी कॉलेजेस में मिलेंगे। हम लोगों ने झारखंड में, आप जमशेदपुर में इनको डेली स्कूल रूम है, वहाँ हम लोगों ने जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक्स है सारे को हम लोगों ने टूल रूम से जोड़ दिया। और वो टूल रूम की एक सेंटर जो है जीओटी कैंपस में भी खुल रही है, और बहुत सारे सेंटर हमारे अपने कैंपस में वो हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बट आई रिक्वेस्ट ऑल आवर स्टूडेंट, बी ए टॉर्च बियरर, बी ए लीडर, मेक दिस कंट्री प्राउड एंड मेक दिस कंट्री ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। So last, I would like to share my dream for the GOT, the entire dream of our stakeholder। Our dream, हमारा जो सपना है, our dream is to make Jharkhand a knowledge hub, GOT a knowledge hub। It is our shared responsibility, it is our shared dream। Everyone is a part of this dream।
Let us come together, let us rise together, make Jharkhand a proud state, make India a proud India, and dominate the world through the technology, through the knowledge. So stay hungry, stay foolish. This was one of the statement. आप इनोसेंट रहे, डोंट लूज द इनोसेंसी, क्योंकि जीवन जो है, जो भी आप पोजीशन पर चल जाए, यदि सेवा भावना से आप ग्रसित नहीं हैं, तब आप टेंशन का शिकार होंगे. So take the responsibility of your family, of your country, of your world. You are the proud student. We feel proud of you, and I hope in the coming days you will make this country proud again. Congratulations again to all the graduating students and their proud parents. Namaskar. और आपके शब्दों तो यही प्रमाण करते हैं कि you are following the savidya yavanuktiye, यानी कि real education is that which liberates. Now with that we move to the next, and I would like to request our Vice Chancellor of Jharkhand University of Technology to release the souvenir in the hands of our Excellency Governor of Jharkhand and Chancellor of the State Universities of Jharkhand. धन्यवाद. अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी आज के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर विनीता सहाय मैम, IIM डायरेक्टर बोध गया, for her conventional address. Convocational address by Professor Vinita Sahai, IIM Director, Bodh Gaya. Johar and good morning. Johar. Indeed, it's a very, very momentous occasion for each one of us. First convocation. The very thought gives me goosebumps. And congratulations to each and everyone who is present here, who is involved in this place for this very, very momentous occasion. Respected Governor Sir, Shri Anuvaji, dear colleague, Dr. Sen, Vice Chancellor, other Vice Chancellors and head of the institutions which are sitting here, faculty colleagues, students, whom I love to call the luminous bundles of energy which is going to light up my country. Graduating students, parents, media, and dear friends. I am stating the categories of the people who are involved here as very, very careful. Why so? Because there are three categories of people who are sitting, three to rather four categories of people who are sitting here. First and foremost, everybody who is involved in academics. Right from Chancellor of the State, who heads the universities, Shri Anuvaji, all the Vice Chancellors, all the teachers, all the non-faculty staff, everybody who is instrumental in creating academic institutions. Few words. Let me tell you, no lecturing, I can't. First of all, my throat is not very good. And secondly, believe me, it's very difficult when somebody raises the expectations. He says, I'm a great speaker, and it really made me feel so humbled. So I'm not too sure that I'll be able to speak so much because of these two constraints, throat and raised expectations. But I have few ideas to share. So to please academicians, let me tell you,
The whole world is looking at us. Never ever in the history of India such a momentous occasion is there. 1.4 billion, average age 28 years, sizable percentage around 70 years, less than 35. Wow, my India is young. And not just it is young, as Sir rightly mentioned, it's hungry. Hungry to change the orbit of life. And you know, why we all gel so well, those who work in Bihar, Jharkhand, they start all this densely populated part of the country, because our opportunities and our challenges are the same. The opportunity of shaping this beautiful young population, opportunity to channelize this luminous bundle of energy which each one of you are. And believe me, one has to be blessed to be in these shoes. ऐसे ही नहीं चाणक्य ने कह दिया था कि शिक्षक को कभी साधारण मत समझना, सृष्टि और विनाश दोनों इसकी गोद में खेलती हैं। ये कोई साधारण बात जिंदगी नहीं। और जो चीज असाधारण होती है, the bigger the power, bigger is the responsibility. इस बार हमने इस यंग पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, नहीं रास्ते पे लगाया, नहीं स्केल अप किया, नहीं स्केल अप किया, तो क्या ब्रिटिशर्स को ब्लेम करेंगे, फॉरेन फोर्सेस को ब्लेम करेंगे? नो, इस बार सारी जिम्मेदारी ये मंच पे जो लोग बैठे हैं, ये जो आगे जो लोग बैठे हैं और ये जो सब काम कर रहे हैं, इनकी है। यानी हम जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हम जो टीचर्स हैं, हम जो नॉन फैकल्टी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करता है ताकि माहौल क्रिएट कर सके जिसमें बच्चा आगे सीख सके। ये अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिम्मेदारी में हमें हारना नहीं। ये बहुत खूबसूरत जिम्मेदारी है, हमें जुट के इसको पूरा करना है। दूसरी विंडो है पेरेंट्स की। 22 साल का अथक प्रयत्न, परिश्रम today is culminating into something so beautiful. Every parent in India waits for this momentous occasion where he can lead the graduating ceremony of his or her child. So congratulations to each one of you. Wonderful job done, and a huge round of applause to you. And why did I ask you to applaud for them? Because parenting, believe me, is the most difficult task. Something which used to be so instinctive. But in today's scenario, with such a fast-changing environmental situations, it has indeed become very challenging, and nobody, salutes or give accolades for the job well done to all the parents. Third window, of course, is media. Come on, there's only one narrative in the country which should go on, and it is education. Believe me, the cusp, the place, the Jharkhand, Bihar, this was all one. So I always keep telling that the only narrative, big narrative in this space and geography has to be around education. Scale them up, make them ready, done. Nothing more, nothing less. So make sure the narrative remains on the ground. And last but not the least, the graduating students. I know you've had enough of sermons, enough of lessons, pretty much done and dusted, but still a few ideas to share. You're entering into adulthood. In India, we know it better.
that till now you were under some umbrella or the other, first the parents and then the institutions. I have more than 40 stamps on my passport and I keep telling everywhere, no matter where I go, that Indian students are privileged. No matter even if they are 40, they continue to remain the responsibility of the parents till the time they start working. So yes, now this is this new world happening where you want to become responsible because finally adulthood arrives now. At 18, of course, you would have done few years ago. At this era of adulthood, few advices. Responsibility pickups. First responsibility, for sure, always remember, you are the programmer of your life. I will try and speak in the lingo which you understand, though let me tell you, Gen Zs are very, very, very different. And we continuously go up to be abreast with you all. Believe me, the first rows, you have no idea what goes on in their head. Where HR guys in the corporates are telling, oh, we don't want to work with Gen Zs, we don't even understand where they come from. Nevertheless, with whatever little experience I've had, let me try and give you some tips. Okay, so first is be the programmer of your life. Now that you're going to enter in the real life, there are going to be situations. And at times you may feel, oh, I'm so small, I'm a cog in the wheel. I'm just one bit of this large organization which I've joined. What can I do? What can I change? No, the biggest thing is your own response. No matter how difficult the situations may remain, stay tuned. Stay tuned to that focus point where no matter how little, you still have some influence. Believe me, this may sound simple, but let me tell you, this one habit of ours made what we are reality. Yeah. We are very close to you. We have already become the largest IIM in the country in terms of what matters, which is the student strength. Yes, coming June, I will have 1,600 students on campus. And believe me, this one habit made it possible because I used to hear so much of narrative in the air. यहाँ कुछ नहीं हो सकता, व्यवस्था ऐसी है, 14 साल में बनेगा, मैडम आप बहुत hardworking. This was common rhetoric I used to hear. I said nothing to this has to get ready in 3.5 years flat. This may sound simple. No matter how vyavastha, how situation, how environment, maybe a strict boss, or very unreasonable superior, very unreasonable parents, very difficult environment, not a language which you are aware of, nothing. Under every situation you will have something on which you will work. Energy flows, it grows. If your energy will go on complaining, finding faults, acting on the things which are beyond you, nothing will change. If your energy is focused on things which are very, very low, believe me, organizations are looking for excelling guys like you, looking at innovators like you. Just go and smash it, and you'll be pretty much done. Tip number 2. When I say you are the programmer, go to step 2. Write the program. Write the program all the way down. The way you would like to end this journey. The way you would be known at the day of death. So I was quoting Steve Jobs. Yes, he did mention that if you live every day with the thought that this is the last day and this is where you wish to go, then in any case, can be a pretty good prompt for focusing on things that matter. Abdul Kalam ji definitely अपने जीते जी अपनी legacy decide करके गए थे. तो कुछ किताबें, वो बहुत सारे ideas, वो अनगिनत contributions और 2 जोड़ी पैंट और 3 सूट अपनी legacy लिख के गए थे. Nothing happens by chance. Legacies are always left.
Choose whatever resonates with you. Choose the legacy that you would like to leave behind. Okay? If this kind of overwhelms you, tip number 3. Which in very, very common things you will keep hearing. Too much to do, too little time. 2 pants and 3 coats. I'm always stressed. And women, those who are joining the workforce. Let me tell you, Indian women are the most stressed women in the world, especially the variety that you and me are. India is rising to the fact that yes, we have better representations in every space that we go. And since we are the first timers, we have to be 1.5 times better than rest just to be considered equal. So that's going to make your life a little more interesting. Yes, I know boys must be feeling neglected, so let me come back to everybody. So yes, if you feel the time is not enough, everybody has only 24 hours. So what do? Clearly execute, plan and organize and execute around priorities. Believe me, this is the guru mantra. If ever somebody tells you time management the word itself is a myth. You can't just manage time. What you can manage is yourself. And how would you manage? Organize and execute around priorities. And where will the priorities come from? Tip number 2. The legacy that you want to leave behind. The legacy which you like to leave behind. So, if I continue with Abdul Kalam's example, he knew where he was putting his energies in, because he knew what he wanted to leave behind. The kind of legacy that he wishes to create. That will give you a clear compass. Don't try and manage your life by clock. Try and manage it by compass. That's a more meaningful way to have a direction, What do I? Because, especially, let me tell you, my heart goes out to your generation. Because you are always hearing from my generation, almost more often than not, very condescendingly, sorry, Jim, is dabbe mein lage rehte ho. I'm talking about that mobile. Yes, we are distracted. We are there's so much drawing attention. Sometimes you must be feeling like you are telling your parents, which I keep telling the parents. हम लोगों के टाइम में वेडनेसडे को चित्रार और संडे को पिक्चर, इसके बीच में कुछ नहीं होता था. If at all we went and switched on the television at 6:30, कृषि दर्शन आ रहा होता था. हम टीवी बंद करके चले जाते. This generation doesn't have this beautiful liberty. They are always having 20 stimuluses crying for their attention, which makes their life much, much more difficult. I'm sorry, yes, we do understand. And in spite of all these distractions, how would you focus is a big challenge, which is why I'm saying you can only and only prioritize. You will have to do things, first of course, the firefighting elements, income tax ki last date, boss ne report banai hai, all that is a must-do types. But the second one is the most important, which will not nudge you, which will not hit on your nervous system, and yet they will be important things to do. Important things like prevention, important things like planning, important things like relationship building, important things like empowering people. Believe me, they are never, never, never urgent. They never press you. They don't hit your nervous system. But that is what's going to take you on a long step. So believe me, these 3 things will help you win over self. Just by absolutely in command of the situation, you are the programmer. Choose the responses which you wish to do for every situation. Focus on things which are within your control. Give it your best and the magic will happen. Second, for sure,
create your own destiny. आप चाहते क्या हैं लिख लीजिएगा. I've been teaching now for 32 years. जिसने लिख दिया उसने कर दिया. Everything in the life is created choice. This auditorium was created choice. First in the mind and then in the reality. So create your destiny in the mind if you get created in the reality. And then of course based on that choose your time, how and where you invested. These three things will help you become master of self. But the life doesn't start there. Because in the organizations you may be expected to be successful even in the larger setup. Two more things there would help. One of course is, there is, like we all have this feeling, that you understand me. My parents don't understand me. My boss doesn't understand me. My question always is, do you understand? Like, this is a very open question I tell the fellow parents who come along with me. I said, "Aapko samajh mein nahi aata Gen Zs, where do they come from?" Likewise, even you have to understand.